तो फैक्ट वाले में जो हम कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं उसमें मेन पॉइंट्स लिख लें। आपने एंटेगनिस्ट प्रोटैगनिस्ट लिख लिया था ना, आप इसमें आगे ऐड करो। देयर आर ऑल्सो मैनी माइनर कैरेक्टर्स इन नैरेटिव। देयर आर ऑल्सो मैनी माइनर कैरेक्टर्स इन नैरेटिव। माइनर का मतलब है छोटे, अनइम्पॉर्टेंट। जैसे मेजर हो गए वैसे माइनर। माइनर कैरेक्टर्स इन द नैरेटिव। मोस्टली, अगला सेंटेंस, mostly these characters serve as witnesses. Mostly these characters serve as witnesses. And for providing highlights to the main character. And for providing highlights to the main character. Like, famous example ले रहा हूँ एक, like Dr. Watson in the series Sherlock Holmes. Like Dr. Watson in the series Sherlock Holmes. Full stop. Minor characters can also act as confidante. Minor characters can also act as confidant. confidant. confidant माने कि साथी, सहयोगी, कोई विश्वास पात्र, उसको बोलते हैं confidant. Comma, a close friend of the protagonist. A close friend of the protagonist with whom he or she can confide in. With whom he or she can confide in and share, confide in, जिससे वो अपने सीक्रेट शेयर कर सकती है, and share secrets or innermost thoughts, or innermost thoughts. Minor characters are often one-dimensional and static. Minor characters are often one-dimensional and static. Static तो समझते, स्थिर, माने जिनमें चेंज नहीं आती. Full stop. There is little or no change oblique development in them throughout the narrative. There is little or no change oblique development in them throughout the narrative. These sometimes become representatives of a single character. These sometimes become representative of a single character, like the faithful servant, comma, the wicked stepmother, comma, miserly old man, etc. Wicked stepmother, faithful servant और the miserly old man. मतलब कंजूस बूढ़ा, सौतेली माँ जो खतरनाक होती है, एक नौकर रामू काका हमेशा हेल्प करते हैं, है ना. तो ये टाइप्ड कैरेक्टर है, टाइप कास्ट हो गए हैं वो. जैसे हमें पता है रामू काका तो या तो नौकर चलाक या फिर रामू काका होगा. रामू काका तो इतना हिट कर दिया बॉलीवुड ने, लोगों के नाम अब रामू काका ही हो गए, वो नौकर के लिए यूज कर रहे हैं, प्रॉपर नाम को कॉमन नाम बना दिया. Such characters are called flat characters because they represent only one characteristic or function in the narrative. They represent only one character or function in the narrative.
On the other hand, a multi-dimensional or round character, a multi-dimensional or round character undergoes development throughout the narrative, undergoes development throughout the narrative इसका एक एग्जाम्पल ले लो बस लुइसा LOUISA ग्रैंड ग्रिंड GRAD in hard times written by Dickens in hard times written by Dickens is both a multidimensional and dynamic character is both multidimensional and dynamic character क्या नाम लिखा लुइसा ग्रैड ग्रिंड ये हार्ड टाइम्स एक नॉवल है डिकन्स का ही लिखा हुआ है उसका कैरेक्टर और आपको कोई कैरेक्टर दिखता है तो बताओ चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए द मोस्ट या हाँ द मोस्ट ऑब्वियस टेक्निक द मोस्ट ऑब्वियस टेक्निक to tell the readers about a character is by doing it directly or explicitly is by doing directly or explicitly by the narrator in this technique narrator directly introduces a character and tells the reader about his or her qualities in it narrator directly introduces the character and tells the reader about his or her qualities habits कितना के लिख पाए वो पढ़ो पहले tells the readers about the character and his or her qualities comma habits qualities के आगे जोड़ दो qualities comma habits and aspirations 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 full stop sometimes another character describes sometimes another character थोड़ी ऐसा लिखो a character describes another character अब easy हो जाएगा sometimes a character describes another character or the character describes himself जब himself करेगा ना तो उसको ब्रैकेट में डाल दो self characterization of the or the character describes himself देखो ना sometimes a character describes another character or a character describes himself जब himself लिखा उसके आगे ब्रैकेट में डाल दो self characterization are examples of implicit or indirect characterization are examples of implicit or indirect characterization
फुल स्टॉप। Indirect characterization can be unreliable to some extent. Indirect characterization can be unreliable to some extent. Can be unreliable, unreliable, अविश्वसनीय होती है कई बार, क्योंकि कैरेक्टर अपने बारे को डिस्क्राइब कर रहा है या दूसरा कैरेक्टर कर रहा है, तो अगर कैरेक्टर खुद ही अनरिलायबल है तो दूसरे के बारे में भी गलत बता सकता है। जैसे ट्यूबल के बारे में बोल रहा है कि ट्यूब, जैसे मान लो शाइलॉक बोले ट्यूबल इज वेरी काइंड, ही लव्स ज्यूज, ही लव्स क्रिश्चियंस आल्सो, तो क्या आप बिलीव कर लो? कहीं ना कहीं डाउट रह जाएगा। शाइलॉक का खुद का कैरेक्टर कैसा है? बिकॉज ही हेट्स क्रिश्चियंस, तो उसका फ्रेंड ज्यू क्या क्रिश्चियन से लव करता होगा, उनको मानता होगा। अनरिलायबिलिटी हो जाती है थोड़ी सी अगर ये चीज हो, इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। चलिए बाकी हम लोग कल अगर क्लास लगेगी तो कल 2 बच्चे हैं, ये निपटा देंगे। 2 क्या ज़्यादा ही हैं अभी, तो चलिए कल देखते हैं।